हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉरियर डायरीज। देखिए, आज के जो हमारे मेहमान हैं, ही ऑब्वियसली नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज इफ यू आर इंडियन देन ऑफ कोर्स आप क्रिकेट देखते हैं, और अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ऑफ कोर्स आप आईपीएल देखते हैं, और अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आपको गुरकीरत सिंह मान तो पता ही होंगे। गुरकीरत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वॉरियर डायरीज। Thank you for having me. So, Gurkeerat, obviously, we will talk about your IPL journey and काफी लंबा सफर रहा है आपका इंडियन क्रिकेट में. But before that, I want to ask कि कैसे मतलब, how did it all start for you? How did you actually get interested in cricket? मेरे साथ ये था कि पहले आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट और लकीली मैं पीसीए स्टेडियम के बिल्कुल आई यूज्ड टू स्टे नियर द स्टेडियम ओनली। तो वहां से हर रोज प्लेयर्स आते थे जो प्रैक्टिस करने आते थे, तो उनको देख के मेरा और इंटरेस्ट बन जाता था। एंड फिर मैं चलता चलता शाम को लाइक अदर किड्स प्ले, तो मैं वहां पे जाके उनको देखने लग जाता था। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट बहुत उसमें आया एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई वांट टू प्ले क्रिकेट। तो फिर उन्होंने बस एडमिशन करा दी। पहले तो वही उसी के लिए था कि एंजॉय है ना, फन करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोफेशन बन गया एंड देन थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस। एंड ऑफ कोर्स मतलब थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस इज क्वाइट एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज जिस तरीके से आप एक्सेल कर रहे थे, यू आर ऑब्वियसली एट अ वेरी यंग एज पार्ट ऑफ द सीके नायडू विनिंग अंडर 22 टीम आल्सो, एंड देन मिनर्वा के साथ भी आपका एक्चुअली काफी लंबा एसोसिएशन रहा है, व्हिच आई विल आस्क यू अबाउट लेटर. लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स ऑब्वियसली एन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट केम अलोंग. तो उस दौर के बारे में मुझे बताइए, मतलब वाज दैट द टर्निंग पॉइंट यूड से ऑफ योर करियर प्रोफेशनली एंड पर्सनली? तो किस तरीके से मतलब योर लाइफ टुक अ टर्न आफ्टर यू गॉट दैट आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट विद किंग्स 11 पंजाब? डेफिनेटली आई विल से कि वो जो मोमेंट था अंडर 22 सीके नायडू ट्रॉफी में, आई थिंक दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल करियर। और उसके बाद फाइनल में वी वन द ट्रॉफी एंड जब मेरा अभी इट वाज नॉट लाइक श्योर कि आईपीएल होगा नहीं होगा, नथिंग वाज क्लियर बाय दैट टाइम एंड आई हैड टू गो टू हैदराबाद फॉर डेक्कन चार्जर्स होती थी तब टीम, तो उनके डेक्कन चार्जर्स ट्रायल्स के लिए हैदराबाद. आई हैड टू गो। या सो आई हैड टू गो फॉर द ट्रायल्स देयर। लेकिन एयरपोर्ट पे ही मुझे जो किंग्स 11 के असिस्टेंट कोच थे एंड हमारे भी तब कोच थे पंजाब के मिस्टर विक्रम राठौड़, जो अब इंडियन टीम के बैटिंग कोच है। तो ही कॉल्ड मी अप एंड ही टोल्ड मी कि किंग्स 11 से आया है मुझे कॉल, सो दे आर इंटरेस्टेड एंड यू गो टू देयर ऑफिस एंड जस्ट डू द साइनिंग। सो आई सेड सर मैं तो एयरपोर्ट पे हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ मैं। तो वहां पे ट्रायल्स के लिए उन्होंने बुलाया, तो ही वाज लाइक दे आर ऑलरेडी साइनिंग यू, सो इट्स योर विश नाउ, इट्स अप टू यू टू डिसाइड। क्योंकि वहां पे ट्रायल्स देने हैं, पता नहीं ट्रायल्स में सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, सो वो राइट. बहुत वो हो जाती हैं। तो फिर मैं वहां से एयरपोर्ट से सीधा अपना मैंने कैब किया, सीधा किंग्स 11 के ऑफिस पहुंच गया। तो वहां पे कर्नल अरविंदर जो उस टाइम पे हेड थे वहां पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वी वांट टू साइन यू एंड ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। तो मैंने बिना कुछ सोचे मैंने सीधा घर पे फोन किया कि मैं साइन करने लगा हूँ जी आईपीएल के लिए। तो एवरीबॉडी वाज हैप्पी, घर पे भी खुश थे, तो मैंने तभी बस साइन मारे साथ के साथ। उस टाइम पे तो बस यही बहुत ज्यादा खुशी थी, दैट फिर आपके सामने ऐसे मोमेंट्स जब आते हैं आपकी लाइफ में, व्हेन यू गेट रिकॉग्नाइज्ड फॉर समथिंग, तो आप पुराना सब जब सोचते हो तो हाँ. देखते हो कि व्हाट ऑल यू हैव डन एंड उनका अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो या. उसी चीज की बहुत खुशी होती है। एंड डेफिनेटली जब एडम गिलक्रिस्ट थे, तो पहले दिन ही जब मैं गया तो एडम गिलक्रिस्ट को मिला, और जितने वहां पे और डेविड हसी थे, प्रवीण कुमार भाई थे हमारे, और तो ये सारे प्लेयर्स को मिलके वैसे ही बंदा खुश हो जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट। Yeah, getting into the top league. And speaking of top या league, after 4 years of playing in the IPL, you finally then got a chance to actually make your India debut. क्या वो feeling describe कर सकते हैं? Was it Australia against Australia in 2016? जैसे मैंने आपको कहा कि व्हेन यू गेट रिकॉग्नाइज्ड, तो जो आपका पास्ट है, जो अपने पास्ट में इतना हार्ड वर्क किया या जो भी किया, सो एवरीथिंग दैट एवरीथिंग हैज बॉइल्ड डाउन टू दिस मोमेंट नाउ, दिस इज व्हाई आई वर्क सो हार्ड एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है एंड आई एम श्योर हर एक प्लेयर, जो हर एक स्पोर्ट्समैन जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए आई थिंक इट हैज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स इन देयर लाइफ।
And after that, after 6 years of playing with Punjab, after that, you spent some time in Delhi also, and then finally last year Royal Challengers Bangalore के साथ you were scooped up there because उनका जो एक बैटिंग लाइनअप रहा है शुरू से ही बहुत बढ़िया रहा है, मतलब particularly with Virat and AB, तो I guess two of the best batsmen in the world is in that one team. तो वो एक्सपीरियंस मतलब एज अ बैट्समैन आपको किस तरीके से उस चीज ने एनहांस किया? आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आरसीबी के साथ, एंड स्पेशली विराट भाई एंड एबी, आई वाज क्वाइट क्लोज टू देम, और उनसे सीखने को व्हाट यूड से इज कोई भी बैट्समैन हो या कोई भी यंग प्लेयर हो, व्हेन यू नो गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, और ग्राउंड में बैटिंग साथ में कर रहे हो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच यू गेन, और बहुत नॉलेज मिलती है दैट लाइक व्हाट दीस गाइस थिंक अबाउट द गेम, और Yeah. किस सिचुएशन में हम क्या सोचते हैं. Players like them, Virat Bhai or AB, they're just different players. So what we get to know what they think at that moment, and then you can analyze your stuff कि आप क्या सोच रहे हो, and what do successful people like them and they think जिनका success rate बहुत अच्छा है. तो वो सब सीखने को मिलता है, and I think it's definitely one of my best times playing in the RCB. एंड अभी आपका अगर करियर देखा जाए, यू आर नाउ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स एक्चुअली इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. व्हाट हैज इट टेकन फॉर यू टू consistently perform for many years at the top? I think it's all about the preparation and perseverance, your hard work every day in and out. Otherwise कई बार हम सोचते हैं, because especially in a sportsman's life बहुत ऐसे situations आती हैं when we feel demotivated, या क्योंकि ज्यादातर आपको सक्सेस कम मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा उसके लिए तो. एंड मोर ओवर आपको ऑल द टाइम यू हैव टू बी अटेंटिव, बिकॉज इन इंडिया स्पेशली आपको इतना पता है कि अगर आप हो तो आपकी पोजीशन लेने के लिए 100 प्लेयर और खड़े हैं जो बहुत अच्छे हैं और मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा. तो उस चीज के लिए भी आपको रहना पड़ता है कि यू ऑल्सो हैव टू बी इन द टॉप शेप ऑफ योर बॉडी, एंड आपको मेंटली बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना. तो वो सब आई थिंक सभी स्पोर्ट्समैन करते हैं, बट अगर आपको उस लेवल पे रहना है या उस आगे लेवल को अचीव करना है तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा करना पड़ेगा और लोगों से, एंड दैट इज व्हाट आई डू, एंड आई लर्न फ्रॉम माय फेलियर्स. और बस यही कोशिश करता हूँ कि हार्ड वर्क करता रहूं, और रिजल्ट्स आर नॉट इन माय हैंड. And you mentioned body and fitness. उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि particularly, I think you're the right person to talk about this, क्योंकि since you started playing and you had your years in the IPL and in cricket, एक बहुत ही बड़ा लास्ट डेकेड में खास करके मुझे लगता है बहुत अलग ही तरह का रेवोल्यूशन आया है इंडियन क्रिकेट फिटनेस में. सो हाउ हैव यू सीन दैट रेवोल्यूशन? मतलब शुरू में भी क्या ऐसे था, एंड हाउ डिड इट इवेंचुअली चेंज, एंड पर्टिकुलरली इन आरसीबी, आई मीन you've seen it from close quarters at Virat, like has the approach changed now completely when it comes to fitness in cricket? I think definitely Virat Kohli has a big role in, improving the stuff which people, or, putting light to the stuff which people didn't, you can say bother much about or something like that, because this gives you extra advantage in the Yeah. game. And, that's like, so that is what his aim is, to make India the number one team. And he thought the place where we can improve is the fitness of Indian players. And now, luckily, every player, I think everybody who's playing professional cricket gives additional time to his fitness routines, Yeah. which was not happening before. So Yeah. I think that is a great sign for Indian cricket. Yeah, and एक जो एथलीट होता है, you touched upon it already, लेकिन बहुत एक हाई प्रेशर लाइफ होती है, of course, especially if you're a cricketer in India. तो particularly in moments like, for instance, when you made your India debut, और जब आप उस ड्रेसिंग रूम में थे, या even when you go out to play the big IPL games, किस तरीके से आप मतलब हैंडल करते हैं नर्व्स को, एंड इतना क्राउड है, there's so much noise around it, मीडिया में 100 बातें हो रही है, you know that if you're in the IPL then obviously you're in the limelight, so how do you handle that? I think it's just to be, in a positive state of mind, and not
worry too much about the negative stuff, because these days, as we say, social media and all, everything is involved, Yeah, because the game has, we can say that the circumference of the game has, increased a lot, and it's gone to different levels now. So every time we step onto the field, you have to be in the best possible mental state. Otherwise, you know you can crumble and stuff like this, because most of us, if you go and after the games, if you go to the social media channels and stuff like that, which every normal person does, so sometimes it's quite annoying, but yeah, that's, you have to accept the fact that you have to just focus on your game and not worry about the stuff. Because as I always say that when people see somebody on TV or some any sportsman or any game, it's the recency bias. A lot of people suffer from recency bias. They only remember the recent events, whatever is happening recently. So that's why you have to you know put that in mind and forget everything and just focus on the next step. in a career that spans 15 years, Gurkeerat, and counting, there are bound to be setbacks, जैसे हमने already बात करी. तो आपके करियर में आप क्या बोलेंगे, what were the the lowest moments, what were the troughs in your career, and कोई ऐसे moments थे career में जब you felt like, "Oh, is this ever really going to happen for me, मैं क्या कर रहा हूँ," and self doubt creeps in and things like that, and how did you actually end up dealing with it? वही जो हमने बात किया, that almost every sportsman sees that period, may it be in the starting of the career, may it be in the middle of the career or towards the ending. So everybody, तो ये cycle है कि हर बंदा उसको experience करता है. And these things, I think, if you take it in a positive way, they can totally change your approach and make you a different person altogether. And with that, your performances and everything affects. You can say, with me, I personally, it was the starting of my career when I was having my troubles, you can say. And तो वो टेंशन हो जाती है, वो एज भी ऐसी होती है when you're 17 18, that it's a very thin line between the here and there. Yeah, So मेरे को भी था, and I was double minded whether to pursue with my game or continue with my education and stuff. So लेकिन वहाँ पे जो मेरे कोच हैं, मिस्टर सुखविंदर टिंकू, उन्होंने मेरे को, he supported me a lot, and he in fact came home. I almost left, and he came home to my parents and told them to give him 2 years, and because I have potential, so he said I don't want to waste the talent which he has. And I'm still till now, I'm really thankful to him that he's supported me till now, and because of him, I am where I am right now. that's brilliant, man. Matlab, basically the definition of a coach, right? Like when your pupil actually needs it, you're supporting them and shaping their career. He's definitely, that's what his role has been in my Yeah, playing career. amazing. And obviously, this is Warrior Diaries. This is Minerva Academy channel. Pe this YouTube video is actually going to go up. So I got to ask you about your association with Minerva, because at the end of the day, that's how this conversation is actually possible. आपका association काफी साल से रहा है. I think since you were 17 or 18, you've been associated with Minerva. How has that that helped you in your career, or how fond are you of Minerva Academy? I think it's even before that, the time you're mentioning, because Okay. when I was a kid, Mr. Ranjit Bajaj Paji used to come to the ground, and I've known him since then. And Minerva Academy, say when I started playing, first of all, it's always the cricketers which are young and want to go into the club level first. So we used to think about teams like Minerva and teams, so we wanted to play from their team. So the day I entered Minerva, I think after that I've not played from any other club since then, because my relationship with Bajaj Paji has been amazing, and he's been like my elder brother throughout, and he's always been motivating me. And it's like the Minervan attitude, to never say die and never quit attitude.
So we my relationship, and especially now I go there. I train sometimes at the Minerva Academy, at the Minerva Football Academy. I go there. Uh, I meet football players there, and I do my gym exercises sometimes. Now I think recently when I went, they've made a new gym out of the old one, and Yeah. I think it's an amazing gym. So hopefully I've had a word with Bajaj Paji, and he's told me to come there and train before the IPL. And when the players will start coming, I'll go there and do my training and stuff over there. Yeah, and speaking of facilities at Minerva, it's really like something that you probably won't find at most academies or any at all. It's absolutely top notch. Amazing, that it's amazing. I mean, that's what a sportsman wants. There's proper infrastructure. It's You're always bound to improve yourself as a sportsman. Yeah, So I always, whenever or wherever I go, I always emphasis on the infrastructure, which is very important for the development of a sportsman, and you get it all there. when I was researching for this interview, it clicked me, and the Ross Taylor catch that you took, which won Yeah, the catch of the tournament in 2013. Tell us about that. मतलब वो कैसे, how did it feel like? I was in shock after that, because जब मैंने catch पकड़ा तो one thing which I always remembered was the fielding coach that time, Mike Young. He always used to teach us, because we were all young that time, and everybody from Punjab, a lot of Punjab players were there. Me, Mandy, Sandeep. So a lot of players were there. And so he always used to say to attack the ball. Don't think anything else. If it's in the air, you just had to attack the ball. You cannot stay back or think if I'm going to go for a catch or not. Yeah, So I think after one or two games only, that moment came, and I was like, I'm just attacking the ball. It doesn't matter if I catch it or no. I'm not letting it go. So I just went there to catch ho gaya. Everything was done. But I realized it after that when I came back to the hotel. I take my phone out, and there are so many messages, so many video recordings and stuff like that. So तब मुझे I felt that यार हाँ यार अच्छा catch ही है शायद, because everybody's applauding that, and that gave me a lot of confidence also. yeah, So after that catch, because something like that which gives you recognition, all of a sudden you yeah. remember things like that. And who are the players that you really looked up to growing up, and they inspired you to do better? I think every kid from my generation will say, we've always watched Sachin Tendulkar bat, and that's how everybody starts, because the way he used to play, it was like magic to the eyes. So everybody started watching him, and after a certain point, I think when I was practicing in DAV college, UV Paji used to come a lot there to practice. So then I, got fond of UV Paji's batting also. And after that, luckily, I got to play in Punjab. UV Paji was also playing. So I've had a lot of batting partnerships also with Paji. So always when I used to play for Punjab, I used to think कि ये पाजी के साथ बैटिंग आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, मेरे को भी दिखने को अच्छा हो जाएगा, because that is the best seat in the stadium, Yeah, कि अगर आप ऐसे प्लेयर के साथ बैटिंग कर रहे हो. तो बस वही था कि फिर उसके बाद पाजी को बहुत ज्यादा मैं वो करने लग गया था, एंड पाजी वाज एन ऑलराउंडर. yeah. तो वो मेरे लिए इट वाज, तो Yeah, उनका very, very, very माइंडसेट पिक similar करना actually. कि वो Very, very क्या सोच similar. रहे I हैं. mean, used to spin ball as well, and as the fielder also. मतलब जैसे मैंने कहा कि या you're a brilliant fielder. Yuvraj Singh was also in his heyday. He was known for his fielding. मतलब 6 फुट के सरकमफेरेंस में अगर बॉल आ गई तो कहीं नहीं जा रही बॉल. वो तो नेक्स्ट लेवल. Tell me about what you like to do apart from cricket also. What does Gurkeerat Singh Mann like to do apart from cricket, and how does he generally spend his day? I think it's just normal routine. I get up early in the morning, do my training. I've यहाँ पे मैंने घर पे थोड़ा equipment रखा हुआ है, so यहाँ पे I do my training and stuff. तो after that I go to the ground. टिंकू सर के पास I go to bat, and ऊपर से लॉकडाउन में तो बस यही प्रैक्टिस करके फिर शाम को I think 5-6 o'clock जब वो हो जाता है तो you don't go out. And मैं वैसे भी I am not like बहुत हैपनिंग वो नहीं हूँ कि आई गो आउट अ लॉट. आई लाइक टू स्टे एट होम ओनली, और यहाँ पे टीवी देखता हूँ,
and stuff like that. Sit with my parents, discuss normal stuff. Otherwise, कुछ वो exciting नहीं है ऐसा. Just You know, normal life. Do yeah. my thing. That's it. Finally, before we go, I'd like to ask you about looking forward. Like, कैसा approach है आपका, towards the remainder of your career? What are you looking forward to, and what next now for Gurkeerat Singh Mann? I think right now it's the same approach, and the same work ethic which I've been following and doing my exercises and trainings and practice stuff like that. And now that we have to go for IPL also, I think maybe in September. So just preparing for that, and hopefully now we'll get some wins. Go to Dubai and get some wins there. Yeah. Okay. All right. Cool. Thank you so much, yeah, Gurkeerat Yeah. Singh Mann. This has been a Thank real you for pleasure to having me, talk to you. brother. Yeah. Thank you for having me, brother. Okay. Cool. All right, guys. This was Warrior Diaries, जहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं top athletes के साथ. And Gurkeerat Mann, of course, is a top athlete. And until next time, we will see you again.